हेलो। मेरा नाम डॉक्टर तेजस पवार है। आज हम डिजीज़ेस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जीआईटी देखने वाले हैं। आज के टॉपिक में जो माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, रेक्टम, एनस तक जो डिजीज़ रहते हैं ये सब हम आज देखेंगे। जिन डिजीज़ेस की ट्रीटमेंट, जो कॉमन डिजीज़ हैं, उन डिजीज़ के ट्रीटमेंट्स में आपको बताते चलूँगा साइड बाय साइड। इनमें जो टॉपिक्स हमें कॉमनली दिखते हैं जो इस टेक्स्ट में नहीं है, तो मैं आपको सेपरेटली मेंशन करूँगा। तो इसलिए प्लीज़ इफ़ पॉसिबल आपके खुद के नोट्स बना लीजिएगा इसके। फाइन। तो ये जो लेक्चर है ये विटामिन नेचुरोपैथी एंड योगा कॉलेज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। So let us start with our topic today. So the first topic is mouth, disease of the mouth. Mouth is just our oral cavity. तो oral cavity में हमें क्या क्या पैथोलॉजीज दिखती हैं? So coming to the first topic, inflammation of the mouth. Inflammation क्या होता है? So inflammation is nothing but our body's reaction to injury or attack. So whenever our body is attacked by a pathogen or there is a physical injury or a chemical injury, the body will try to repair itself quickly. To do that, it sends a lot of blood to that particular area which is being injured or which is being infected or attacked. So that is the body's reaction to certain external stimuli. What causes inflammation of the mouth? So inflammation of the mouth can be due to injury. Injury can be due to heat, it can be due to cold, it can be due to foreign objects, it can be due to chemical substances. Generally आप देखेंगे छोटे बच्चे हैं, वो साबुन या कोई केमिकल हो, फिनाइल हो, बाथरूम का कोई एसिड हो वगैरह गलती से पी लेते हैं. कुछ एडल्ट्स to commit suicide, they consume such things. So again, this will cause inflammation of the mouth. It will cause something known as excoriation or desquamation of the mouth. Desquamation is nothing but जो soft skin है हमारी mouth की, वो soft skin निकलने लग जाती है. That is desquamation. ठीक है, I'll write it a little bit properly. Excoriation or desquamation. Generally, corrosive chemicals like bathroom acids, phenyls वगैरह are the ones responsible for such and such a thing. Again, the treatment for normal inflammation is nothing. Just leave it alone. It will repair on its own. Body will repair itself on its own. Sometimes inflammation can be caused because of dehydration as well. So in case the inflammation is caused by dehydration, you will see that the skin of the top of the mouth, जो mouth के ऊपर की जो hard palate होती है, the hard part above your tongue, the skin from that hard palate starts to slough off. It starts to shed. It starts to desquamate basically. So during very severe and very high dehydration, also you will have injury or desquamation of your mouth. And moving on, thrush or oral candidiasis. So thrush is something which is because of a fungal infection in your mouth. So the fungus here in question is Candida albicans. Usually a fungus to attack your body, your body's immune system will have to be very low. अभी फंगस नॉर्मली होता है एनवायरनमेंट में, मगर वो कभी नॉर्मल लोगों को अटैक नहीं करता है. बट अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि नॉर्मल हवे में या नॉर्मल मॉइस्ट गीली जगहों पे जो फंगस ग्रो होता है वो आपके माउथ में अटैक करने लग जाए, दैट मीन्स दैट ओनली द पीपल जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है उनको ओरल थ्रश या कैंडिडा एल्बिकन्स का इन्फेक्शन होता है जनरली. मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेड रिडन या हॉस्पिटलाइज्ड या एडमिटेड पीपल होते हैं या HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं. So that is oral thrush. So either in very small or very old,
the two corners where the immunity is very low. Immunity कम कब होती है जनरली लोगों की? So either the very very young or the very very old are the ones who have low immune systems. In those cases you will be seeing Candida albicans oral thrush infection. Alright, now angular cheilitis. So you know our mouth looks something like this. These are our lips. Please consider that these are your lips. Fine. So these are the angles of your lips. So in angular cheilitis, you will have painful cracks develop at the angle of your lips. Generally आप देखेंगे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, उनका मुंह और उनके लिप्स के जो एंगल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली गीले होते हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट. बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट, certain bacteria or even fungus sometimes attack that area, and these areas of the skin just starts to get cracked. That is angular cheilitis. The treatment for it is to keep the angles of your mouth clean, keep it dry. If it is infected, if the infection has caused a swelling, then we can go for antibiotic treatment. We can give them amoxiclav. That would be enough, because most of the times Staphylococcus aureus is the bacteria in question. If Candida albicans is the fungus in question in the particular infection, so see, in Candida albicans you will have a white discharge. मतलब आप जो भी स्वेलिंग होता है उसमें से जो भी पानी निकलता है, जो भी पस वगैरह जैसे निकलता है, अगर वो फंगल है तो आपका जो भी पस निकलेगा वाइट कलर का होगा. अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपका पस जो होगा वो आपका येलो कलर का होगा. एंड इट विल बी स्मेली इन केस ऑफ फंगस. दिस विल ऑल्सो बी स्मेली. Okay, and this will also cause a fever. All right. Acute gingivitis, also known as Vincent's infection. It's called Vincent's infection because it is caused by an organism known as Borrelia vincenti. In acute gingivitis, what is a gingiva? Gingiva is nothing but your gum. आपके दांतों के ऊपर जो gums होते हैं, the pink colored gums that everyone has, that is the gingiva. Gingivitis is actually an infection of the entire mouth. So you will have ulceration of the lips, the gums, the mouth, the throat, the tonsils, everything. And this is caused by Borrelia vincenti. Why does it happen? These are the reasons it happens. So in malnutrition, in any long-standing debilitating disease is something that causes the patient to be bedridden. He cannot move around. वो घूम नहीं सकते, वो constantly admit रहते हैं, बेड पे सोए रहते हैं. They can't walk much. Usually old age में everybody becomes debilitated. Poor mouth hygiene and injury. These are the certain risk factors which will invite this particular Borrelia vincenti to cause infection inside the mouth. Fine. That this is known as Vincent's infection or acute gingivitis. Almost the entire mouth will be infected because of this organism. Again, this is seen in debilitated patients, old age patients. You will not see them in young 25, 30, 40, even 60-year-old people. This will be mostly the people who are continuously bedridden and they cannot move much and they cannot take care of their own hygiene. ये खुद का मुंह नहीं साफ कर सकते हैं, ब्रश नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये बोरेलिया विंसेंटी आ जाएगा फिर वहाँ पे. Aphthous stomatitis, oral ulcers. Generally you will see vitamin B and iron deficiency. These are the one that cause production of our hemoglobin. तो जब भी विटामिन बी और आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो आपका हीमोग्लोबिन कम होने लगता है. This is the first thing that occurs in iron and vitamin B deficiency. If this becomes a deficiency for a very long time, then this will also lead to oral ulceration or aphthous stomatitis. Is that all right? अभी अगर आप फिर से और देखेंगे विटामिन B12 deficiency से you will see something like glossitis. In vitamin B12 specific deficiency, you will have a
thick swollen red beefy tongue. So you will have a red bright it will be bright to dark red tongue and it will be swollen. So you will have a red beefy tongue, in specifically in vitamin B12 deficiency. So that condition is known as glossitis. Glossitis is nothing but inflammation of the tongue. And in iron and vitamin B deficiency, you will see oral ulcers. Viral ulcer, viral infection में you will see herpes simplex infection. So nothing but cold sores. Cold sores are आपने देखा होगा कि आपका अगर ये जो माउथ है समझ लीजिए, तो आपके माउथ के लिप्स के ऊपर या लिप्स के नीचे भी कभी कभी an extremely painful fluid filled pimples occur. They burst, the fluid comes out and they're extremely painful, and no matter what you do, they don't go. The reason behind it is these particular cold sores are caused by a virus known as herpes simplex virus. The same virus is also responsible for chickenpox. Chickenpox, herpes simplex causes chickenpox also. But sometimes some part of the herpes simplex remains in your body. वो रह जाता है, थोड़ा थोड़ा herpes simplex के वायरस पार्टिकल्स रह जाते हैं अपने बॉडी में या नर्व एंडिंग्स में रह जाते हैं. जब भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स फेवरेबल हो जाते हैं तो ये herpes simplex वायरस रीएक्टिवेट होता है. जब भी ये रीएक्टिवेट होता है, आपका जो कोल्ड सोर है, जो लिप्स के अराउंड आपके जो इन्फ्लेमेशन होता है, वो फिर से शुरू हो जाता है एंड विद इन 7 to 14 days वो फिर से बंद होके ख़त्म हो जाता है. ओके, इसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ वेरी पेनफुल. इट इज़ वेरी पेनफुल लास्ट 7 to 14 days एंड इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग. सेल्फ लिमिटिंग यानी वो अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. आप पेन किलर्स और एंटीवायरस ले सकते हैं, मगर उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ही कम होगा, बट वो 7 से 14 दिन रहता है. इफ़ यू हैव एन एंटीवायरल नोन एज असाइक्लोवीर ऑइंटमेंट, 2% ऑइंटमेंट देते हैं असाइक्लोवीर का, अगर आप ये लगाएंगे तो 7 to 10 days तक रहेगा वो, बट इट स्टेज फॉर 7 days एंड देन ओनली इट गोज. कभी कभी किन किन लोगों में हु डू नॉट टेक ट्रीटमेंट और हु डू नॉट नो, हु डू नॉट मेंटेन हाइजीन और डू नॉट or do not take care of these fluid filled pimples, it can cause a bacterial concomitant infection. क्योंकि जब भी fluid filled pustule फटता है, fluid filled pimple फटता है, it causes a very deep hole inside the skin and it causes the bacteria from outside to enter inside the skin and cause a bacterial infection. So you have to take care that if a person is having herpes simplex virus infection, so he will be having multiple pimples somewhere near the mouth, somewhere near the lips. It can be on the lips also, mind you. अगर ऐसा आपको कुछ दिखता है तो हाइजीन और क्लेanलीनेस उस जगह की बहुत ठीक से रखिएगा. जब भी वो पिंपल फटता है तो प्लीज़ क्लीन इट प्रॉपरली with a nice wipe, with nice soap, and don't let it get infected with a bacterial infection. Fine. You can give treatment for this. Acyclovir 2% ointment is the treatment for this. Alright, let's move on. Tumors of the mouth. Squamous cell carcinomas can occur in the mouth, comparatively rare, but like normal practice में you will see squamous cell carcinoma, but then the treatment is surgical depending on the stage of that cancer. Treatment can be either surgical or any other variety. There are also development defects of the mouth. तो आपने कभी देखा होगा, you will have seen certain kids, तो cleft palate और cleft lip में आपको कुछ बच्चों के मुंह देखे होंगे आपने. तो imagine this is the lower lip and this is the upper lip, this is the nose, right? So this is how the kid's mouth looks. Okay, so this is nothing but a cleft palate or a cleft lip. This is a birth defect. Alright, it's an inborn defect है and the treatment for it is surgical. And इसमें क्या होता है, जो lip है और जो nose है, इसके अंदर एक
एरिया रहता है जिसमें स्किन नहीं होती. There is no skin in this particular area. So this particular area is completely red. It has no skin over it. Okay, this is completely red. It has no skin over it. Kabhi kabhi not just the lip has a cleft, but the inner hard palate, soft palate can also have a cleft. Okay, so it can be complete cleft palate. It can be incomplete cleft palate. Fine. So not to go into more details of it. You will see this. The treatment is surgical. It's a genetic anomaly. So this is how cleft palate and cleft lip looks like. You can see यहाँ पे you have a cleft palate. तो आपका ये जो hard palate अंदर है उसके अंदर एक gap है. तो nose और mouth के बीच में एक fistula बना है. So there's a communication between the nasal cavity and the mouth. This देखिए all the way. This is a lip and a cleft palate. Alright. I mean, why do certain people have cleft lip or cleft palate? Oh, the reason is there is a developmental anomaly. तो जैसे जैसे बच्चा पेट में बढ़ता है तो the two halves of the part of the mouth and the nose, whenever they are coming together, they don't stick all the way. A certain gap is left when they are coming together. Fine. So whenever the palate or the lip is coming together, forming one, it doesn't fuse, or it leaves a particular gap whenever it fuses. It doesn't fuse fully. Why does this particular thing happens? Usually it's a genetic anomaly. Sometimes they say that maternal hypoxia or different nutrition may be the cause of this, generally during the 8th to the 12th week. Right. Now coming to the diseases of the pharynx now. pharynx के diseases देखते हैं. pharynx में आपको दो बहुत important चीज़ें दिखेंगी. One is tonsillitis. So let us first discuss this huge topic, tonsillitis. First let us see what tonsils are, what normal tonsils look like. तो जब भी आप मुंह खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके माउथ में दो फोल्ड्स होती हैं, the anterior and the posterior folds, and between the both of them आपको एक राउंड स्ट्रक्चर मिलेगा. This is your tonsils. ये टॉन्सिल्स, इसके अंदर बहुत सारे लिम्फोइड सेल्स, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इम्यूनिटी एंड द हाइजीन ऑफ द एंटायर माउथ. सो अगर माउथ में कोई भी बैक्टीरिया हैं, कोई भी मटेरियल है विच कॉजेज बैक्टीरिया टू बी देयर, द टॉन्सिल्स विल बी इन्फ्लेम्ड, दे विल बी swollen. And there are many reasons why the tonsils can be swollen. If you look at this is a normal tonsil, and if you look at this is a inflamed tonsil. So this particular thing is known as tonsillitis. Right. In real examination अगर आपको देखना है तो this is what it will look like, and this is extremely highly inflamed tonsils. ठीक है, दिस इज़ टॉन्सिलाइटिस. तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? इफ़ यू विल सी, दिस इज़ द एंटायर टॉन्सिल्स. ये छोटी जीभ है. ये टॉन्सिल्स में आपको ये क्रिप्ट्स दिख रहे हैं. सो दीज आर नथिंग बट सर्टन क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस. और ये जो वाइट मटेरियल है, दिस इज़ नथिंग बट पस और फूड मटेरियल है, डेब्रिस. इट इज़ नथिंग बट कचरा है वो, बेसिकली वो निकलता रहता है. और कभी कभी आपको देखेंगे ऐसे वाइट कलर के स्टोन्स निकलेंगे फ्रॉम दीज क्रिप्ट्स, एंड दीज आर नोन एज टॉन्सिलर स्टोन्स. आई विल शो यू टॉन्सिलर स्टोन. सी, तो ये कभी कभी आप जब भी गले में करते हैं तो ये स्टोन्स कभी कभी बाहर आ जाएंगे. दे स्मेल, आपको पता चलेगा, बिकॉज वो बेसिकली फूड मटेरियल होता है जो एक्यूमुलेट होता रहता है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, and when it comes out it smells. तो now हमें क्या क्या जानना है इसमें? what are we supposed to know? tonsillitis क्यों होता है? what is the reason? most of the time it is either some bacteria or some fungus
which is causing the tonsils to be inflamed. The presence of that particular bacteria or fungus और कैंडिडा हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, तो इनकी वजह से आपकी टॉन्सिल इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं. अभी टॉन्सिलाइटिस में आपको सीधे सीधे दिखेगा कि वो जो टॉन्सिल्स है वो स्वोलन हुआ है, रेडिश हुआ है, एंड ऑलमोस्ट कभी कभी इन सम केसेस यू विल सी इतने ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाते हैं टॉन्सिल्स दैट दे टच ईच अदर. बोथ ऑफ द टॉन्सिल्स, दोनों साइड के, दे टच ईच अदर. दैट इज नोन एज किसिंग टॉन्सिल्स. वो एक दूसरे को टच करते हैं. इन दैट केस swallowing food, eating food also becomes very very hard. अगर इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है टॉन्सिल्स का कि दे आर किसिंग ईच अदर, दे आर टचिंग ईच अदर, ड्यूरिंग दैट केस द ट्रीटमेंट विल बी सर्जिकल. In all other cases, or if the inflammation of the swelling of the tonsils is within normal limits, you can control it with antibiotics as well. Sometimes आपको ऐसे देखेंगे आप कुछ पेशेंट्स और कुछ बच्चों के साथ ऐसा है कि उनको बचपन से ही टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत होती है. सिंस द चाइल्डहुड दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ टॉन्सिलाइटिस. तो मोस्टली डॉक्टर्स एंड सर्जन्स रेकमेंड कि अगर आपको बचपन से टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत है दैट यू कैन गेट योर टॉन्सिल्स रिमूव्ड ऑल्सो. बिकॉज अगर हम टॉन्सिल्स जो लिम्फ नोड से निकाल लें तो हमारे नेक में, जॉ में, अराउंड बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं जो टॉन्सिल्स का काम टेक ओवर कर सकते हैं. और अगर टॉन्सिल्स बंद हो जाती हैं या एक दूसरे को टच करने लगती हैं, और इफ़ सपोज़ वो बच्चे को बाद में सांस लेने में तकलीफ़ होने लग जाए बिकॉज ऑफ swollen tonsils, then it can be very very dangerous. So that is not preferred. So in such a case where the swelling of tonsils is so high that the child cannot breathe, then surgery of the tonsils is recommended. Or if the teen person, or if it is an adult also, if around in 20 years old or in his late teens, even then if there is recurrent tonsillitis, बार बार हर महीने होते ही जा रहा है tonsillitis, causing a lot of botheration to that person, even in that case tonsils can be removed if the patient wishes them to be removed. Alright, what are the symptoms that you will have in tonsillitis? You will have a lot of headache, you will have a lot of bad breath, you will have fever, and you will have difficulty swallowing. Causes of tonsillitis, again, virus, bacteria, staphylococcus, candida, same, because oral mouth cavity में you will see the same organisms again and again. वो वही दूसरी जगहों में इन्फेक्ट करते रहते हैं. ओके, नाउ हाउ डू यू अवॉइड टॉन्सिलाइटिस? कैसे अवॉइड करें? हाइजीन, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, और ट्राई करें कि आपका ओरल हाइजीन, आपके हैंड वॉश करें ताकि कोई बैक्टीरिया हो, कोई पैथोजन हो आपके मुंह में ना जाए खाते वक्त या खाने में भी. कौन कौन रिस्क में होता है? जनरली ये चिल्ड्रन में देखा जाता है. टॉन्सिलाइटिस इज जनरली सीन इन चिल्ड्रन, बट इट कैन बी सीन इन टीनेजर्स ऑल्सो, यंग हो या लेट टीनेजर्स हो, बोथ ऑफ देम इट कैन बी सीन. समटाइम्स इट कैन बी सीन इन adults also, but generally it is not that severe. Adults tonsillitis, it is not that severe. How long does it last? वो generally 3 to 7 days तक रहता है, then it goes away. If it is chronic tonsillitis, it can last for a much longer time. Again देखिए, they have said acute tonsillitis, chronic tonsillitis. Acute means कम duration के लिए रहता है. Symptoms are severe but they last for few days. In chronic tonsillitis they last for maybe months or very long amount of time. Recurrent tonsillitis, again and again, if the patient is having tonsillitis, then that is a recurrent tonsillitis. तो they say कि अगर आपको 7 से ज़्यादा टाइम्स अगर टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू गो फॉर सर्जरी. ओके, नाउ इश्यूज फ्रॉम टॉन्सिलाइटिस वही है. इट विल कॉज डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ, इट कैन कॉज बैड ब्रेथ, इट कैन कॉज टूथ डिके, अदर ओरल इश्यूज. बिकॉज अगर आपके टॉन्सिल्स इतने स्वोलन हैं तो आपका ओरल हाइजीन भी काफ़ी ख़राब रहता है. अभी हम ट्रीटमेंट देखते हैं. व्हाट डू वी डू इन अ पेशेंट हु हैज़ टॉन्सिलाइटिस? सो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम अभी टॉन्सिलाइटिस के? तो वील रेकमेंड अ वार्म सॉल्टी वाटर गार्गल. तो डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ टॉन्सिलाइटिस, इफ़ द टॉन्सिलाइटिस इज़ वेरी बेनाइन, बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है दिक्कत, तो वार्म सॉल्टी वाटर से गार्गल कर लीजिए दिन में 4-5 बार. दैट विल बी इनफ. इफ़ नॉट, बीटाडीन का गार्गल मिलता है, बीटाडीन सोल्यूशन मिलता है 2%. गार्गल विद दैट बीटाडीन सोल्यूशन 3 to 4 times a day.
It should be enough. If you still have tonsillitis and they're extremely inflamed, bad breath आ रही है, बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है tonsils में, go for azithromycin 500 mg once a day for 5 days. Alright. Again, diphtheria. Diphtheria is also known as whooping cough. Diphtheria is something that we all get vaccination against. तो हमें छोटे बच्चों को डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटानस का वैक्सीनेशन दिया जाता है. अभी इवन टुडे अगर आप नॉर्मल टेटानस का भी वैक्सीन लेने जाए तो इट्स नोन एज टीडी बिकॉज इट हैज़ बोथ टेटानस एंड डिप्थीरिया इन इट. So whenever most of the people in India currently are immunized against diphtheria, but in extremely backward tribal areas, you will still be able to see this disease known as diphtheria. Like जैसे अभी polio was completely eradicated because vaccination was so successful. Diphtheria is still seen in certain areas because not everybody vaccinates. So diphtheria में क्या क्या होता है we'll see, and this occurs to very 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 small children. Let us see the pathogenesis and the pathology of the disease. So this is basically in short about diphtheria. So around 1 to 25 age group में दिखता है. The first sign of diphtheria is a whitish or a grey patch in the throat. It is like a pseudomembrane. It's like a membrane that develops on the throat. Fine. कैसे दिखता है? I'll just show you. This is somehow how it will look. Let us see some more images. Okay, तो आपको दिख रहा है एक ऐसे membranous structure कुछ तो भी grow हो रहा है. This membranous structure is diphtheria. ये छोटे बच्चों में आपको दिखेगा 1 to 25 years of age में you will see this organism. The entire name of diphtheria is Corynebacterium diphtheriae. Okay, so this is the causative organism that causes this particular condition. The most common cause of diphtheria is poor vaccination in children under 5 years of age and lack of awareness among public about the booster doses of DPT. वो एक बार ले लेते हैं and then they forget and बाकी के doses नहीं लेते हैं. The child gets diphtheria, he falls sick. Let us see diphtheria में बच्चे के साथ क्या क्या होता है. So this is a document from the World Health Organization. उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है कि डिप्थीरिया के साथ कैसे कैसे करें. तो डिप्थीरिया इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया. मोस्ट ऑफन causes infection of the upper respiratory tract. What will you see in diphtheria? You will see pharyngitis, you will see nasopharyngitis, tonsillitis, laryngitis, or a combination of any of these. This will be associated with a firmly adherent pseudomembrane over the tonsils, pharynx, larynx, or the nares. Nares मतलब nose के दो sides. In severe cases, infection can spread to trachea also. It can cause tracheitis and it can block the respiratory passage also. Cervical lymph node का swelling cause कर सकते हैं. And अगर airway obstruction पूरी तरह से हो गया तो वो बच्चा मर भी सकता है. It can cause asphyxiation of the baby because of that pseudomembrane. Alright. स्किन पे भी आपको कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का ये दिखेंगे स्किन एंड वुंड पे. Most common spread is again person to it's a bacterial infection. It spreads like a bacteria. Coughing, sneezing वगैरह से वो spread होगा. अभी treatment protocol that is currently followed is not exactly like this. Mostly the child will be in a very severe condition whenever we find them. Whenever such a patient comes, the first idea is to secure his airway. The first thing that you have to do is secure the airway. Then you give him antibiotics, then you give him azithromycin, all that comes afterwards. You have to give him supportive therapy for his airway management first. Second will be for his heart, because if he can't breathe, there's nothing else. Antibiotics ab baad mein dijiye. First secure the airway. Alright, and when everything is done, when the baby is healthy, if he's fine, after giving antibiotics and everything he cures, please give him a vaccine. Is that alright? Fine. So this is the protocol that is given by WHO. Now let us
go for the next disease. Diseases of the salivary gland. Salivary gland में you'll see this disease known as mumps. So mumps के against also we have a vaccine. It is known as MMR, mumps, measles and rubella. इसके भी boosters रहते हैं. So what is mumps? It is an inflammation or the swelling of the parotid gland. Parotid gland is also known as your salivary gland, which produces saliva. Sorry. So these are your salivary glands, and the mumps infection causes swelling of these parotid glands. Right? So this is the parotid gland. Alright. So whenever it swells, it causes big swelling. Almost it becomes very, very big, and it becomes very, very, very painful. This is how the particular person will look like. So in this case, this is a child. It can occur in a little bit older people also. So this is mumps. This is how it looks like. A painful swelling of the neck. Mostly it is of one side. It can be of both the sides also. These are the signs and symptoms of mumps. You will have a headache. You'll have pain in joints. There will be swollen parotid glands. There will be loss of appetite and nausea. There will be fever, and there could be dry mouth also. Treatment is to get everybody vaccinated. Okay, mumps is spread very, very easily. In fact, आपको symptoms आएंगे उसके 7 days before and 7 days after, more than 7 days after, it will keep on spreading the mumps virus particles. It can infect many people, many children especially, because children normally वो हाथ वाथ धोते नहीं हैं. So if a particular child or a particular kid has mumps, you have to isolate that particular child. You have to keep him somewhere where no other kid comes in contact with him, or nobody who is not vaccinated comes in contact with him. Person who is vaccinated can come in contact with him, it's all right. This is the story of mumps. It is not a life-threatening disease, but it is a dangerous disease, because if mumps is not treated, if the virus is not treated, and the infection spreads, because in viruses there isn't much that we can do for treatment. We can give antivirals, but they don't always work. In this case they do work, but since the child is very small, the disease can spread very fast. Where can it spread? The mumps virus can spread to pancreas. It can cause pancreatitis. It can spread to the testis, causing orchitis. If suppose some people who get mumps after puberty, and it can cause sterility also in such people, and they won't be able to have kids after that. It can also cause meningitis and meningoencephalitis, which is deadly. It can kill the particular patient. Alright. Sometimes a situation similar to mumps might occur in adults or in 30-40-year-old patients. What happens is, आपकी जो salivary gland है, जो parotid gland है, वो पैरोटिड ग्लैंड सलाइवा बनाती है और एक डक्ट से वो मुंह में सलाइवा पोर करती है. तो वो जो सलाइवरी डक्ट होता है, कभी कभी वो सलाइवरी डक्ट में स्टोन फॉर्म हो जाता है. इफ़ द सलाइवरी डक्ट इज़ हैविंग अ स्टोन इनसाइड इट, आपकी सलाइवरी ग्लैंड अगेन स्वोलन हो जाएगी, just like in mumps. So you can mistake these two conditions among each other. So you can get tested for it. Also, if the person is vaccinated, then it is probably a salivary stone and not mumps. Tumors are not very common, but let's just have their names. So the most common benign tumor for salivary gland is pleomorphic adenoma. And this is benign. It is not carcinogen, it's not malignant, it's not going to spread anywhere. But if it does become malignant, then it is known as salivary carcinoma. Alright. Okay, now coming to the more important parts. We are coming to the esophagus now. Esophagus मतलब it is a food pipe, जिसमें से खाना हम जब खाते हैं, चबाते हैं, it goes to stomach via the esophagus. 20 to 25 centimeter long pipe. अब esophagus का अगर आप lower portion देखेंगे तो you'll see
ये डायग्राम ज़रा देखिए, प्लीज़ हैव अ केयरफुल लुक एट इट. ये जो आर्टरी आपको दिख रही है, दिस पर्टिकुलर वेन दैट यू कैन सी, दिस कम्स फ्रॉम द लिवर. फाइन. So whenever there is blood flow inside the lower part of the esophagus, somehow it is connected to the blood flow from the liver because it is coming from the left gastric vein, which is coming from the portal vein. Now what happens is, if there is any kind of blood congestion in the liver, अगर liver में ठीक से blood move नहीं हो रहा है, तो there will be stasis of blood accumulate होएगा, it won't move very fast. This will lead to dilation. If suppose there is a person who has a lot of alcohol, he is having liver cirrhosis, he's having certain liver problems. There is a person who has chronic hepatitis. Agar if he's not having alcoholic disease, maybe he's having chronic hepatitis, maybe he's having SIADH, certain liver diseases which causes venous stasis inside the liver. If the blood is not able to flow properly, then the lower part of the esophagus, the veins that are supplying it, the esophageal, आई थिंक दिस इज़ अ लिटिल बिट ईजियर टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ देखिए, ये आपकी पोर्टल वेन है. फाइन. सो दिस इज योर पोर्टल वेन. यहाँ से आपकी लेसर कर्वेचर से आपकी निकल रही है. तो जो भी ब्लड सप्लाई इसोफेगस के लोअर पोर्शन में हो रहा है, दैट इज़ somehow being blocked. There is stasis in that blood. Because that blood supply is being blocked, the veins start to dilate. Whenever there is dilation of these veins, this dilated veins, their walls become very thin. So you will see classic thin dilated veins. These thin dilated veins are nothing but esophageal varices. The risk with these esophageal varices is, if this particular person eats something or drinks something, and if these vessel walls become very very thin, these vessel walls might burst and that person might bleed inside the esophagus and might vomit out blood. अगर ये खून की वेन्स फट जाएं, बिकॉज इनकी वॉल्स बहुत थिन हो जाती हैं, बिकॉज यहाँ पे ब्लड सप्लाई ब्लॉक होता है या स्लो हो जाता है, विच इज़ वाई द वेन्स स्टार्ट टू डायलेट. When the veins start to dilate, there will be thinning of the walls. These thin walls will be susceptible to rupture. If these walls rupture, the person might vomit blood. That is known as hematemesis. And you'll see hematemesis in those people with esophageal varices. The treatment that you can give to a patient with esophageal varices is octreotide or lanreotide. Fine. Anyway, so this is in short what we will see in esophageal varices. So again same thing, dilated veins, variceal bleeding is the most common complication. How do we find out if a particular person is having dilated veins or not? तो वी कैन पुट ए कैमरा. वो मुंह से कैमरा डालते हैं अंदर इसोफेगस में, और उस कैमरा में आपको ये, दिस इज़ द स्कोप ऑफ द कैमरा, दिस इज नोन एज एंडोस्कोपी. सो यू हैव अपर GI एंडोस्कोपी. In upper GI endoscopy, you'll be able to see these particular veins. You can understand what is the risk of bleeding, what is the size of the dilation, how much is the chance that the particular vein might burst. Right now, why does this happen is portal hypertension. So basically, there is a lot of high pressure blood going through these veins. Whenever the pressure going through these veins increases, the veins start getting dilated, the walls become thin, and eventually the veins burst. The person vomits out blood. The reason of esophageal varices is basically liver disease. Most of the time it is liver cirrhosis. All right. Leads to esophageal varices. Fine. So again, portal hypertension, venous congestion, esophageal varices. Just remember, hematemesis means vomiting blood. Hemoptysis means coughing blood. अगर आपको vomiting आ रहा है blood का, तो it will be a large amount. And if अगर आपको
Cough हो रहा है तो it will be a small amount. So coughing blood is hemoptysis, vomiting is hematemesis. Moving on. So the next important disease is your gastroesophageal reflux disease, or GERD in short. So this is again one more inflammatory condition of your esophagus. कभी कभी क्या होता है, स्टमक का जो एसिड है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, या ड्यू टू सम फॉल्ट ऑफ द लोअर esophageal sphincter. The joint between the esophagus and the stomach is known as the lower esophageal sphincter. तो ये एक स्फिंक्टर है जो स्टमक के अंदर का एसिड esophagus में नहीं आने देता. तो ड्यू टू अ फॉल्ट ऑफ द लोअर esophageal sphincter, or due to some other reason, hyperacidity causing erosion of the lower esophageal sphincter, any of them, it can lead to reverse flow of the fluid from acidic fluid from stomach back to the esophagus. This can damage the esophagus, it can cause irritation to the lower portion of esophagus, and it can cause inflammation to that particular part of esophagus. This is known as peptic reflux, also known as gastroesophageal reflux disease. Alright, if it happens too much, then blood also can come, because there is a lot of blood supply to the lower portion of esophagus, okay, as we have just seen. So in peptic ulcer esophagitis, so there is a very vicious cycle that occurs. The lower portion of the esophagus will be eroded with acid. Inflammation will occur at the lower portion of esophagus. The inflammation that is occurring at the lower portion of the esophagus, so imagine this is the lower portion of the esophagus. So this is your lower esophageal sphincter, and this acid is damaging the walls of your esophagus. तो अगर आपका ये डैमेज करता है, फिर से आपका इन्फ्लेमेशन होता है, यहाँ पे हीलिंग होता है, फिर से एसिड ऊपर आता है, फिर से डैमेज करता है, फिर से इन्फ्लेमेशन होता है, फिर से हीलिंग होता है. दिस ऑकर्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन many times. After particular number of times, this starts to get fibrosed. ठीक है, यहाँ पे फाइब्रोसिस होता है, यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होता है. कि जब भी स्कार फॉर्मेशन होता है, अभी आप यू नो कि वेन एवर यू गेट एन इंजरी, आपको इंजरी होने के बाद वहाँ पे स्कार बनता है. जो भी स्कार है वो धीरे धीरे श्रिंक होता है, इट श्रिंक्स एंड इट रिड्यूसेस इन साइज. अभी इतना स्कार है तो वो धीरे धीरे जब भी जैसे जैसे हीलिंग प्रोग्रेस होगा वो स्कार छोटा होते जाता है. वैसे ही इसोफेगस का लोअर पोर्शन श्रिंक होते जाता है, और ये जो वाल्व है यहाँ का जो स्फिंक्टर है उसमें और इनकॉन्टिनेंस क्रिएट करने लगता है. फाइन, व्हाट आर द कॉजेज दैट रिफ्लक्स माइट ऑकर? सो द कॉजेज इज, एक तो इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता होगा. तो इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर कब ज़्यादा होता है? एक तो प्रेगनेंसी में इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर विल इंक्रीज, कॉन्स्टिपेशन इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर विल इंक्रीज, ओबेसिटी अगेन, हाइपर एसिडिटी, low level of gastrin leading to lower tone in the lower esophageal sphincter. These are the reasons why you have GERD, gastroesophageal reflux disease. Now, as we saw in the mouth, if the patient is swallowing any chemical substances which are acidic or caustic, again it can cause inflammation to the esophagus. Same things, just like we saw in GERD, but they will be very highly severe, okay, because the fibrosis and the healing will occur throughout the length of the esophagus. पूरा का पूरा esophagus में fibrosis होगा in that condition. But अगर वो बार बार होता है तो it is dangerous. If it occurs once, it is still okay. Fine. So moving on, one more important topic is your Ecclesia Cardia. So in Ecclesia, you will be seeing, just let me draw a diagram for you for Ecclesia. So this is Ecclesia Cardia. So you will see normally in 21 to 30-40 year old people, you will see this disease. What happens in this is, now look, this is your diaphragm, fine. This is your esophagus.
दिस इज योर स्टमक. अभी ईसोफेगस और स्टमक में यहाँ पे आपको लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है. ऑलराइट, नाउ ड्यू टू सम रीज़न this lower esophageal sphincter always stays closed. It doesn't open, or even if it opens, it doesn't open properly. And because of the improper opening or the improper functioning of the lower esophageal sphincter, the food that you are swallowing, because the food that you swallow comes into the esophagus, and the food that you are swallowing stays inside the esophagus, it does not go into the stomach, and this causes the ballooning up of your esophagus. It starts with the lower part and then it advances upwards, but it's usually something like this. Okay, so this is your Ecclesia Cardia. It is due to improper tone inside this particular lower esophageal sphincter. It is also known as a cardiac sphincter of the esophagus. Fine. So because of improper tone of this particular sphincter, the food stays inside the esophagus. The esophagus starts to dilate. Esophagus बड़ा होने लगता है because खाना esophagus में रहता है, खाना stomach में नहीं जा रहा, तो esophagus बड़ा होने लग जाएगा. अगर esophagus बड़ा होने लग जाता है डायफ्राम के ऊपर, तो वो हार्ट पे प्रेशर डालेगा. यहाँ पे there is heart, यहाँ पे there are lungs inside the thoracic cavity. All of these complications will occur. Sometimes this can burst. ये अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ईसोफेगस बर्स्ट भी हो सकता है. What are the reasons behind it is improper tone inside the lower esophageal sphincter. The treatment for Ecclesia Cardia is to do a surgery to loosen the lower esophageal sphincter so that it can open and close properly. Most of the time this will solve the issue. Spontaneous rupture of esophagus, or also known as the Boerhaave phenomenon. Spontaneous rupture of esophagus can occur during vomiting. तो अगर आप वॉमिटिंग के टाइम पे रेचिंग करते हैं, बिकॉज वॉमिटिंग के टाइम पे कभी कभी व्हेन यू वॉमिट फूड कम्स आउट, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट कभी कभी वॉमिटिंग करने के टाइम पे सिर्फ आवाज़ आता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल पेरिस्टाल्टिक वेव क्रिएट होती है ईसोफेगस और स्टमक में. इफ़ दिस पेरिस्टाल्टिक वेव इज़ वेरी पावरफुल, इट कैन टीयर द ईसोफेगस लॉन्गिट्यूडनली. वो लॉन्गिट्यूडनली आपकी ईसोफेगस को टेयर कर सकती है. This usually occurs during vomiting when a lot of pressure is put on the esophagus. Alright, so this is the spontaneous rupture of esophagus. If esophagus ruptures, the water and food items will go inside the lungs. It can cause aspiration pneumonia. It can cause, it can go near the heart also. It can cause pericarditis, etc., etc. Alright, we don't know why this peristaltic wave gets so hard or so strong, but it does happen. Tumors are very rare. Know this, if there is any malignancy inside the esophagus, it spreads very fast. अगर esophagus के अराउंड कोई भी कैंसर आता है, किसी को अगर esophagus कैंसर या स्टमक कैंसर, समवेयर अराउंड दैट रीजन का कैंसर अगर उनको होता है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस. इसका रीज़न ये है कि वहाँ लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इफ़ यू सी, ईसोफेगस के दोनों साइड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिम्फ नोड्स हैं. और जब भी कैंसर मैलिग्नेंट होता है बेनाइन से, जब भी कैंसर मैलिग्नेंट होता है, तो वो ईसोफेगस में अगर हुआ तो वो स्प्रेड बहुत जल्दी होता है. ओके, सो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ वेरी लो इन केस ऑफ ईसोफेजियल कैंसर. Alright, so that's all about esophagus. Esophagus में I believe, no, I don't believe there's anything that is remaining. There is something known as an esophageal diverticulum which is not given in this book, but then I also believe कि there's no point in discussing it because it's a very surgical item. But मैं सिर्फ नाम लिख देता हूँ यहाँ पे. And I will show you how it looks. So esophageal diverticulum will look something like this. तो basically ये esophagus का hernia है. तो esophagus में there are a lot of muscles and all and everything. ये trachea है actually. But see, this is the esophagus. This is not the diagram. Fine, this is better. Fine, so whenever you have a peristaltic wave in the esophagus, so this is how a peristaltic wave looks like in a
normal esophagus. Fine. So in a normal esophagus, this is how food goes forward and it reaches the stomach. But in an esophageal diverticulum, there is a separate pouch, blind pouch. वैसे ही रहता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बट अगर वो persistently रहने लगा तो this diverticulum can roll ऐसे गोल 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 on the surface of the stomach, on the diaphragm. It can irritate the lungs nearby. It can cause problems if it becomes big. If it is small, there's no problem, but if it becomes big, it can irritate the lungs. That's all. It is treatable. The treatment is surgical. एक्सरे में आपको डाइवर्टिकुलम इस तरीके का दिखेगा. ये आपका इसोफेगस है, फाइन, और ये इसोफेगस का, इफ यू कैन सी, दिस इज अ पाउच, फाइन. दिस इज एन इसोफेगस डाइवर्टिकुला. Okay, now esophagus mein, that's it, nothing more than this. Now let's come to the stomach. Stomach mein देखिए, there is, the first point is always inflammation in every story. First thing is always inflammation. So gastritis, itis is inflammation. What is the inflammation of stomach? पेट खराब हो जाना is gastritis. कुछ खा लिया, कुछ बाहर से खा लिया, पानी पूरी खा लिया, पेट खराब हो गया, उल्टी आ गई, etc. That is gastritis. Okay, so why does gastritis occurs? Let us see. So look, imagine this is your stomach, right? Fine. Abhi, you eat something, it goes inside your stomach. There is acid inside the stomach. Now you will also know that stomach is having a lining inside. It is having a very, very thick mucosal lining inside. Yeah. So inside the stomach, to protect the stomach from digesting itself, there is a very, very thick mucosal lining. ठीक है. तो स्टमक के अंदर, अभी स्टमक के अंदर बिकॉज फूड डाइजेस्ट होता है, फूड इज़ नथिंग बट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, एंड स्टमक इज़ ऑल्सो अ मसल. तो स्टमक को खुद ही डाइजेस्ट कर लेगा. तो सो दैट द एसिड डज नॉट डाइजेस्ट द स्टमक इट सेल्फ, देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव म्यूकोजल लाइनिंग that protects the stomach from digesting itself and protects the stomach from injuring itself. Now, sometimes there are gaps inside this mucosal lining. तो कभी कभी अगर किसी जगह पे mucosal lining deficient हो गया, तो अगर समझो इस जगह पे you have a mucosal lining that is deficient, तो जो एसिड है आपका, स्टमक का जो एसिड है, that will go and come in contact with this particular area. And this particular area will become inflamed. Okay, this particular area will become inflamed. And यहाँ पे एक irritation शुरू होगा स्टमक को. Okay, now it is very small. अभी तक अल्सर नहीं हुआ है इस जगह का. It has been exposed to the acid, और constantly वहाँ पे वो acid, वो जो थिन जगह है, जहाँ पे म्यूकस कम है, जहाँ पे प्रोटेक्शन कम है स्टमक का, वहाँ पे वो जगह इरिटेट हो रही है constantly again and again. When this particular area starts to get irritated, inflammation starts, and that is gastritis. Okay, so whenever you have acid foods, you have junk foods, you have oily foods, पानी पूरी खा लिया वगैरह, उसके बाद में you will have lot of acid secretion. Because of that acid secretion, if there is any area inside your stomach that is deficient, it is not protected properly by the mucous membrane, then it can lead to inflammation of this particular area. That is gastritis. Fine. Just deficient mucus basically, right? ठीक है. तो यहाँ पे कोरोजन शुरू होता है. नॉर्मली अक्यूट गैस्ट्राइटिस में यू विल सी ब्लीडिंग दिखता है इसमें. तो इफ़ देर इज़ समबडी हु इज़ हैविंग एन एसिड रिफ्लक्स, लाइक स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, अलॉन्ग विथ इट स्टमक में एक ऐसा एरिया भी है जहाँ पे म्यूकोजल प्रोटेक्शन ठीक से नहीं है, ये बैरियर स्टमक का ठीक से नहीं बना हुआ है, तो उस एरिया में एसिड जाके इरिटेशन शुरू कर सकता है, और इन सम केसेस इस जगह में से ब्लड भी बाहर निकल सकता है. तो द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ अक्यूट गैस्ट्राइटिस इज़ द हीमोरेजिक गैस्ट्राइटिस. अभी तो डायरेक्टली ब्लड वेसल ही एसिड ने डिज़ोल्व, स्टमक को डिज़ोल्व करते करते ब्लड वेसल तक पहुँच चुका है. ऑलराइट.
तो दिस इज़ एन acute hemorrhagic gastritis. इट्स द मोस्ट डेंजरस फॉर्म. इट कैन लीड टू, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस. डिपेंड्स ऑन हाउ मच ब्लीडिंग इज ऑकरिंग. इफ़ नॉट, अगर थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है तो इट विल लीड टू एनीमिया एंड मलीना. इट विल लीड टू डार्क क्ले कलर्ड स्टूल्स, क्योंकि वेन एवर ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एसिड इट टर्न्स brownish to dark brownish in color, and your entire stools will be colored in that color. The stools will be dark gray colored stools in case you have bleeding inside the stomach in hemorrhage due to acute hemorrhagic gastritis. All right, what are the aggravating causes की gastritis बढ़ता किससे है? तो if you are having any tablets like aspirin and you don't take antacids along with it, तो अगर आप एस्पिरिन, पैरासीटामोल या ऐसे कोई दवाई ले रहे हैं और उनके साथ अगर आपने एंटासिड नहीं लिया तो आपको एसिडिटी होगी, आपको गैस्ट्राइटिस होगा, हो सकता है इफ़ यू टेक इट फॉर लॉन्ग इनफ. फाइन. अल्कोहल कंजम्पशन, अगेन अल्कोहल डिजॉल्व कर देता है ये प्रोटेक्टिव लेयर, अगेन इट विल लीड टू गैस्ट्राइटिस. सर्टन बैक्टीरिया, स्टैफिलोकोकस एंड सैल्मोनेला, ठीक है. हेलिकोबैक्टर पायरोरी भी आएगा शायद बाद में. सिगरेट स्मोकिंग अगेन इज़ वन ऑफ द कॉजेज़, बिकॉज सिगरेट स्मोकिंग से एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्स ज़्यादा होगा, और लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर का कॉन्टिनेंस भी ठीक से नहीं होता है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. ट्रीटमेंट विथ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एक्सेट्रा, अगेन पॉइजन्स, अल्कलीज एंड रिगर्जिटेशन ऑफ द एसिड इन टू द स्टमक. राइट, सो दैट इज़ अक्यूट गैस्ट्राइटिस. यहाँ पे उन्होंने अल्सरेशन दिया है, बट अल्सरेशन आएगा बाद में. Now chronic gastritis. Chronic gastritis is just acute gastritis, not so severe, less severe, but for a very very long amount of time. Chronic refers to time. अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चल रहा है तो it is chronic. Okay. Now the next is Helicobacter associated gastritis. The most common that we are seeing today nowadays is Helicobacter associated gastritis. We have a few, I think it was quite a few years ago that we found out that Helicobacter pylori was associated with acidity and peptic ulcer in particular. So whenever they took the samples की जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर था उनके पेप्टिक अल्सर में से उन्होंने सैम्पल निकाल के देखा and they found out Helicobacter pylori in it. So they are saying that Helicobacter pylori is also known to cause gastritis like conditions and peptic ulcer like conditions, and Helicobacter pylori will cause especially chronic gastritis. एंड ये इन्फेक्शन है तो लंबा टाइम के लिए चलता है. द ट्रीटमेंट फॉर Helicobacter pylori इज नथिंग बट amoxiclav प्लस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक pan 40 फॉर ट्वाइस अ डे. तो ये मर जाता है Helicobacter pylori with these medicines. You also give colloidal bismuth sulfate और sucralfate with it. तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है अभी acute gastritis, chronic gastritis में what will we do? How will you treat the patient? So treatment is this, but if you have acute gastritis and it is inflammatory, it is only because of either alcohol consumption or something else, not an organism, not a pathogen, then the treatment will be an antacid like pan 40 twice a day for 14 days or so. This has to be taken on empty stomach before meal. Okay, this has to be combined with sucralfate or colloidal bismuth subcitrate. This is a suspension. You have to, it's a syrup basically, so you have to drink it again thrice a day for 14 days. This was sucralfate. CBS is no longer used. We use sucralfate now. फाइन. तो सुक्रालफेट देते हैं और pan 40 देते हैं acute gastritis और chronic gastritis के लिए. अगर Helicobacter associated gastritis है तो आप इसको amoxiclav ऐड कीजिए 625 milligram twice a day for 14 days. Sorry, 10 days. All right. तो ये है स्टोरी गैस्ट्राइटिस की. अगर ये ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है तो ऐसे ऐसे करिए. अगर नॉर्मल गैस्ट्राइटिस है तो
दिस इज व्हाट यू डू. अभी देखिए, आई वांट टू टेल यू अबाउट व्हाट सुक्राल फेट इज. ये करता क्या है? तो पैन 40 जो है, पैन 40 विल रिड्यूस द एसिड्स प्रोडक्शन इन द स्टमक. ठीक है, इट्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. वो हाइड्रोजन आयंस का प्रोडक्शन कम करता है स्टमक में. अगर हाइड्रोजन आयंस का प्रोडक्शन कम होता है तो एसिडिक नेचर और एसिडिक सोल्यूशन कम होता है, बिकॉज एसिड इज नथिंग बट H प्लस आयंस. सो पैन 40 विल रिड्यूस द एसिड प्रोडक्शन. ठीक है. Okay, now what does sucralfate do? Sucralfate is like a thick liquid, and what it does is it coats the inner part of stomach. It forms a layer around the inner part of stomach. Fine, that is what sucralfate does. ये कोटिंग दे देता है. जहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे अगर लेयर डेफिशिएंट हुई, अगर स्टमक की लेयर यहाँ पे डेफिशिएंट हुई, तो इफ व्हेन यू टेक सुक्रालफेट विल मेक अ न्यू लेयर इनसाइड द स्टमक, एंड यहाँ पे इरिटेट नहीं करेगा वापस वो एसिड, स्टमक का एसिड. फाइन, डन. दैट्स गैस्ट्राइटिस. इट कैन बी ऑटो इम्यून क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ऑल्सो. Okay, that's uncommon. Peptic ulceration. Peptic ulceration is the most common disease in the entire digestive system. Left, right, you will see people everywhere with acidity. If acidity occurs for a very long amount of time, it will lead to peptic ulceration. So a very long standing or a very high amount of acidity or acid reflux will lead to peptic ulceration. अगर बहुत ज़्यादा है, अगर ईसोफेगस में रिफ्लेक्स जा रहा है तो लीड टू ईसोफेगल अल्सरेशन ऑल्सो. तो पेप्टिक अल्सरेशन में क्या होता है, लेट अस सी. मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि स्टमक में यू विल सी एन एरिया वेयर द म्यूकस इज डेफिशिएंट. वैसे ही अभी ये जो एरिया है ये इरिटेट हो के दिस एरिया स्टार्ट्स टू इंक्रीज इन साइज. तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन पेप्टिक अल्सर. तो सॉरी, सो दिस इज योर स्टमक, राइट? Fine. This is your stomach. This area of your stomach is known as the lesser curvature, and this area of your stomach is known as the greater curvature. Fine. Food goes inside your stomach. Fine. यहाँ पे खाना वगैरह, acid वगैरह, all of these things stay. Most common site for a peptic ulcer is over here, near the pylorus. This area is known as the pylorus. Fine. This is the most common area where peptic ulcer is seen. What happens in a peptic ulcer is the erosion by the acidic contents of the stomach is so high. इतना ज़्यादा टाइम से वो इरिटेट कर रहा है उस जगह को, इतना टाइम से वो म्यूकस वहाँ का निकाल रहा है, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ से एवरीथिंग इज कमिंग. धीरे धीरे दिस एरिया विच इज़ कॉन्स्टेंटली अटैक्ड बाय द स्टमक्स एसिड starts to develop into an ulcer. Fine. So there will be a bright to dark red, maybe actively bleeding also sometimes, may not be actively bleeding also, may be healed, may be scarred, may be fibrosed, but you will see ulcers, and you might see more than one ulcers. Cause of these ulcers is hyperacidity, type A personality. If there is a person who constantly angry, has spicy food, all of these things come together, then he'll have acidity, and he might have peptic ulcer in the future if he has acidity for a very, very long amount of time. Treatment is the same. This is the same treatment which we saw. It's the same for peptic ulcer also. It is only for a longer duration. ज़्यादा टाइम के लिए हम ट्रीटमेंट देंगे सिर्फ. ओके ओके. तो ये एक है जगह where you will see an ulcer. There's also an area over here that you might see, and very, very rarely you will see it in the esophagus also, the ulcer. Treatment is the same. So this is nothing but an extension to your gastritis, your acute gastritis. Basically acute hemorrhagic gastritis का extension है, बहुत दिन के लिए चलता है तो वो अल्सर बन जाएगा, right? What are the factors that are responsible for secretion of mucus? तो स्टमक का जो ये प्रोटेक्टिव म्यूकस है जो प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, ये किस फैक्टर्स पे आधारित है?
तो रेगुलर एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ एस्पिरिन इफ़ यू आर कंटिन्यूस, बिकॉज आपको देखेगा कि देर आर मैनी वुमेन इन देयर 40s 50s कॉन्स्टेंटली कहते हैं हमको हेडेक होता है, हमको हेडेक होता है, तो नो प्रॉब्लम, हम एस्पिरिन ले लेते हैं एंड दे आर क्रॉनिकली हैबिचुएटेड, वो रोज़ उनका दिन में एक दो तीन चार एस्पिरिन चलता ही रहता है. इन सच पीपल यू विल सी रिमार्केबली पेप्टिक अल्सर, दे विल ऑल्सो बी हैविंग एनीमिया, एंड बिकॉज वो पेप्टिक अल्सर में से खून निकल के उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. सो एस्पिरिन यूज इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और एनी अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आता है पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, फाइन, ऑल ऑफ दिस, निमेसुलाइड्स डिसकंटिन्यू, ओके फाइन, ये सब ड्रग्स आते हैं उसमें. रिफ्लक्स ऑफ बाइल एसिड्स एंड सॉल्ट्स, अगेन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़. अगर ये बार बार होते रहता है तो म्यूकस का इरोजन ईसोफेगस के लोअर पोर्शन में ज़्यादा होगा. अगर गैस्ट्राइटिस बहुत टाइम के लिए चलता है, अगेन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस अफेक्ट होने वाला है. अभी आते हैं क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर. द पेप्टिक अल्सर, अगेन वो पेनिट्रेट हो चुका है पूरा स्टमक के वॉल में, अंदर जा चुका है वो अल्सर, मसल लेयर तक आ चुका है, अभी ब्लड वेसल तक भी जा चुका है, वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रहा है, वो क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर. नाउ पाइलोरिक एंट्रम में मोस्ट ऑफ द पाइलोरिस के अराउंड आपको दिखेंगे ये. अगेन द ट्रीटमेंट इज़ द सेम. क्रॉनिक अल्सर्स में आपको हीलिंग और स्कारिंग ज़्यादा दिखेगी, फाइब्रोसिस ज़्यादा दिखेगी, एंड देयर कैन बी स्ट्रिक्चर और कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अगर जहाँ पे स्कारिंग होता है तो वो एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो डिसफिगर्ड बन जाता है. इट बिकम्स डिसफिगर्ड बिकॉज इट पुल्स द स्टमक इन अ वियर्ड मैनर. द स्कार टिश्यू पुल्स द स्टमक इन अ वियर्ड मैनर. ठीक है, तो उसकी वजह से यू विल सी दैट्स नोन एज स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, shrinkage of that scar. What are the complications that can occur in peptic ulcer is hemorrhage that we saw in acute gastritis, we saw in acute peptic ulcer and chronic peptic ulcer also. Perforation is a complication of acute and chronic peptic ulcer. What I was telling you about clay colored stools, that is known as melena. Melena is actually blood in the feces, but you don't see red colored blood in the feces, you don't see red colored blood in the stool, you will see clay colored stool. All right, that is melena. Hematemesis is vomiting of blood. This is something that we saw in esophageal varices due to liver cirrhosis. Okay, it has nothing to do with peptic ulcer, but if suppose irritation occurs enough and there is irritation of the stomach, there is bleeding from an ulcer, and that blood from the ulcer is being vomited, then in case of peptic ulcer also you can see hematemesis. Did you understand? वो पेप्टिक अल्सर आपके स्टमक को इरिटेट कर रहा है. दे विल बी मल्टीपल पेप्टिक अल्सर्स इन दिस केस प्रॉबेबली, और वो अल्सर इरिटेट भी कर रहा है और ब्लीड भी कर रहा है, और इतना ज़्यादा ब्लीड हो रहा है स्टमक में कि आपको ब्लड की वॉमिटिंग हो गई, बिकॉज द स्टमक गेट्स फिल्ड विथ ब्लड. अगेन इन शॉक ऑल्सो यू विल सी, बिकॉज ब्लड लॉस इतना ज़्यादा होता है, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनसाइड द स्टमक दैट यू हैव टू वॉमिट इट आउट. It might lead to shock. The person might collapse, he might faint because of low blood pressure, because पूरा तो blood stomach में चला गया, esophagus में चला गया, तो person might go into shock. Perforation, अगर अल्सर बहुत बहुत ज़्यादा डीप जाते गया तो वो पूरे के पूरे स्टमक को पेनिट्रेट करके स्टमक के पूरे स्टमक के अंदर होल बना दे सकता है. ओके, दैट इज़ परफोरेशन. और वो जब स्टमक के अंदर अगर होल बन गया, it is very very painful, it can lead to shock. Patient will be in so much pain that he'll run to the hospital, not himself but somebody will have to carry him. Okay, pyloric stenosis is a complication of chronic peptic ulcer. Stenosis is nothing but fibrosis and rigidity, so that the stomach's valve, the lower valve of the stomach, this particular one, so I told you about pylorus, right? So this is the stomach, so this is your pylorus. This valve stops working because for the food to go from the stomach to the duodenum, there is a valve here. Okay,
this starts to get fibrosed, and when it gets fibrosed, that's known as pyloric stenosis. Okay, so tumors of the stomach there's just one thing that is relevant here. The cause of stomach cancer is actually eating smoked fish or any kind of smoked meat. This is something that causes stomach cancer. Okay, that's the causative factor. That's all you need to know. I believe that's all for today. We have covered till stomach in this part. We'll be covering the intestines, the duodenum, the large intestines, appendicitis, appendix, everything. We'll also be seeing about piles and bleeding and all of those things. Just like we saw esophageal varices, we'll have piles also. The same principle applies there. Alright, so we'll see you in the next lecture. We'll end this session for today. Alright, thank you.